अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूँ अहमद नबी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन और This is पाकिस्तान the is up preamble. to This is the Pakistan is up preamble. to yeah, it's up to the I think नहीं have a preamble basically ना कि जब से इंसान इस दुनिया में आया है तो ये यही सवाल होता है राइट कि क्या जिंदगी के कोई मायने है, कोई मकसद है, या ये बस एक रैंडम इवेंट्स हमारी जिंदगी में हो रहे हैं जिनका जिनका नो मीनिंग टू इट ना राइट कोई लाइक सर है जैसे ना कि कोई पैर है, बस चल या रहा है. कि बस मतलब आपकी जिंदगी है और वहाँ जिन लम्हों से, जिन लोगों से, जिन मौकों से उसका टकराना होता है, उसका जो भी नतीजा होता है वो जिंदगी है और उसका देयर इज नो लार्जर पर्पस टू इट। कोई बड़ी कहानी नहीं है, कोई बड़ा मकसद नहीं है, और फिर आप मर जाते हैं और खत्म। राइट? और जहां तक हम साइंस के अगर वो करें कि मतलब जो आप मेजर कर सकते हैं, जो आप नाप सकते हैं, तो आप कहते हैं कि मतलब वही सच है। अगर हम इसे नहीं मेजर कर सकते तो बैड लक। एंड तो उसके मुताबिक तो नहीं, कोई नहीं नजर आ रहा, कोई मकसद है या कुछ है। और फिर एक यकीन यही है कि नहीं, देयर इज लाइक कोई ज्यादा एक बड़ा जिंदगी की कोई पीछे एक बहुत बड़ी कोई मीनिंग है, कोई मायने रखती है। और हमें ये बात पूरी तरह समझ नहीं आती, बट एवरी नाउ एंड देन एक झलक मिलती है जिससे आपको अंदाजा होता है कि हाँ, एक निजाम है, कोई कुछ तो हो रहा है पीछे। और आज पाकिस्तान टीम लग 400 का टारगेट सेट हुआ, और उसके बाद उन्होंने ना ही सिर्फ मतलब कि कि वही कि ऐसा नहीं है कि हम लोग आखिरी में वो धक्का खा के गाड़ी डीएलएस से आगे निकल रही है, कुछ हो रही है ना। पाकिस्तान ने तबाह और बर्बाद, नीस्तो नाबूद कर दिया न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक को। और बेशक के डीएलएस पे जीती, बिकॉज जैसे उस्मान आप अभी कह रहे थे कि लग रहा था कि अगर 50 ओवर पूरे भी होते तो पाकिस्तान 402 चेस कर देगा। तो ये कल आप इतने एतमाद और अश्योरिटी के साथ कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं हो सकता, न्यूजीलैंड एक ये हार गई, ये ही एक बड़ा अपसेट था, ये बहुत जबरदस्त टीम है, पाकिस्तान का कोई सीन नहीं है। सो बताएं, जिंदगी का कोई, इज देयर अ मीनिंग टू व्हाट वी सी? डज पाकिस्तान remind you again that God exists, or you have an explanation for this? Yeah, I'm like, okay. Yesterday, I won't say that I was being cynical. मैं यानी एक रियलिस्टिक सिनारियो पेंट कर रहा था कि भाई देखो ये टीम है और ये हालात हैं और ये होना है. अब मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं एक दिन में सुबह से लेके जो आपकी जो देखो जिंदगी में ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रास्ट किन स्टेट्स का होता है. एक तो लाइफ होती है जब आप पैदा होते हैं और एक डेथ होती है ना जब आप मरते हैं. लाइक वो उससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट आपका हो नहीं सकता. पाकिस्तान ने आज वो एक कॉन्ट्रास्ट एक ही कोई 4-7 घंटे की गेम में जिया है, मगर उल्टा. यानी शुरू में आप मर गए थे और यानी आपको कितना और कोई एक फोर्स यानी कोई भी कुदरत का निजाम जो भी बोलो यार, कितना और आपसे कोई कह सकता है कि यार आप इस टूर्नामेंट से बाहर जा रहे हैं. आपको ये गेम ना सिर्फ जीतनी है, आपको चेस करना है 402 रन. हाँ, उसके बाद से आपको एक नेट रन रेट का ऐसा स्विंग इंजीनियर करना है कि आप आपकी अगली गेम भी आप अगर जीते तो यूर इन अ बेटर पोजिशन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स. लाइक सो यू स्टार्ट ऑफ विद डेथ. हाँ, कि आपने 400 एंड यू आर लिटरली, हम लोग बात कर रहे थे कि यार इससे बुरा पाकिस्तान अटैक किसी ने कभी देखा हो. आसिफ इकबाल, माजिद खान जब ओपनिंग कर रहे थे पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में बॉल के साथ, वो इनसे बेहतर थे जिस तरह की आज बॉलिंग कराई है. हाँ, अभी अभी 2 मिनट नहीं हुए हैं कि हारिस रऊफ ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड कायम करा है ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग फिगर्स इन अ वर्ल्ड कप, के शाहीन आफरीदी आ गए हैं. हाँ, टू ऑफ द गाइज, लाइक टू ऑफ द पोस्टर बॉयज of Pakistani pace, of Lahore Qalandars, of PSL dominance, of supremacy. Two of the poster boys going for a combined total of like 180 of 20 overs. 401 रन. केन विलियमसन आके वो ऐसी तबाही इनिंग्स खेल रहा है, लाइक गोइंग एट 130 की स्ट्राइक रेट. बेचारा मोहम्मद वसीम आपको बचा रहा है, बेचारा मोहम्मद वसीम जूनियर आपको बचा रहा है. एंड आप 401 पे यानी हु, लाइक यार अहमद,
Just tell me, who would have thought? Would you, like, even the craziest, most optimistic fan that I know is Asad, I think. Like, Asad से ज्यादा मैंने कोई पागल देखा नहीं है जिंदगी में, क्रिकेट और पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम की fortunes में. I don't think I've seen anyone crazier than him. I don't think even he thought that somehow, after conceding 401 in an ODI World Cup match, we will end up on the other side, not only having won the game, but having kind of tweaked the net run rate advantage to ourselves a little bit so that हमें इंग्लैंड को इतनी बुरी तरीके से नहीं हराना हो अगले हफ्ते अगर अगर श्रीलंका अपना काम कर लेती है. So I mean, you're asking me to explain it. I'm not going to explain it. I stand by only this. This is the only truth I know. Ahmed Naqvi, this is the only truth, the one and only truth I know, is that I am not an insane man. I am a sane human being. I'm not insane. What I said yesterday about this game was a rational, sanity laden assessment of the game as the whole 99% of the rational world, of the real world, would have seen it. आज जो हुआ है, it's not something for me to make any kind of call on. I feel like I'm physically and mentally incapable of making a call on this. I feel देखिए दो चीजें हैं कि ये दूसरी दफा लगातार एक वर्ल्ड कप में I feel like you're पाकिस्तान my ने shrink today, in fact. Yeah, no, I actually no shrink is an interesting thing because I think shrink once again is the closest जो आपकी rational scientific दुनिया है उसकी कोशिश है कि मतलब ना हम एक्नॉलेज करें कि हाँ ठीक है एक हद तक आप सिर्फ रैशनैलिटी से दुनिया को समझ सकते हैं. ये जो आपके जज्बात और ख्यालात और याददाश्त और वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करने की ज़रूरत है बिकॉज इनका भी एक बड़ा अहम रोल है. क्या रोल है वो अभी तक समझ नहीं आया. बट मैं यही कह रहा हूँ कि दूसरी लगातार दफ़ा न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने हराया है और उस पिछली दफ़ा भी 2019 में मुझे इसके बारे में जब लिखना था तो मैं मज़हब की तरफ गया था और आज भी मैं मज़हबी बातें कर रहा हूँ. तो पिछली दफ़ा मैंने एक मौला अली का कोट है कि जो मुझे अंग्रेजी में याद है so apologies but कि I discovered my Lord in the failing of my plans, right? And I wrote that for Kane Williamson कि like सब कुछ न्यूजीलैंड ने हर एंगल से सोची हुई है. मतलब ना कि ऑस्ट्रेलिया पे उस दिन मैं जितना भी गुस्सा कर रहा था न्यूजीलैंड पे आप गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि अगेन इनके भी मुल्क में ये कोई 5वीं 6ठी स्पोर्ट है मगर ये लोग फुल उसको जितनी एफिशिएंसी से खेल सकते हैं और इनकी इनकी इतनी मनहूस किस्मत है कि मतलब अल्लाह माफ करे, राइट? और उस पे वो हर दफा आते हैं कि यार फुल उन्होंने सोचा है ये प्लान पाकिस्तान जैसी एक उल्लू की पट्टी टीम आके जिनके हरा के चल जाती है. और वहां पे जो हजरत अली की बात है ना कि यहाँ पे आप सही खुदा को ढूंढ पाते हो जब आप कहते हो कि यार मुझे लगता था कि मैंने सारा एंगल सोच लिया था और फिर जो मैं होना चाहता था वो नहीं हुआ और मतलब मुझसे भी कोई बड़ी कुव्वत है और यू हैव टू सबमिट टू दैट रियलिटी. एंड आई थिंक वही मैंने केन विलियमसन को पिछली दफा कहा था, इस दफा भी वो बात सही है. और इनफैक्ट मैं मुझ लाइक so you and I have been very lucky that we've lived through, we saw the 92 win, we've seen many hal matches and in a way that puts us at a disadvantage. Like एक मैं शो देख रहा था आजकल उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, फाउंडेशन नाम है. हाँ, तो उसमें ना a lot happens in it but basically there's this two people who are spreading a religion and one of them was alive and had seen the prophet. And near his deathbed he says to the other person who had not been alive to see the prophet, he's like, I believe, like, I do all of this spreading the message because I saw the guy. And so, like, it's very easy for me to do this. But I envy your faith because you never saw the guy, but you still believe enough to, like, change your life for this. So I feel like, for those fans, like, when you've seen this a few times and then you kind of try and explain it and find reason ना, तो वहां पे आप पीछे रह जाते हैं क्योंकि वही है कि like अभी अपने बाल खींच रहे हो कि ये हुआ क्या है आज. मतलब forget that it's you're happy about it but when you're asked to explain it मैं कैसे explain करूं. मगर जिन लोगों का यकीन था जैसे कि कल भी लोग जो कैलकुलेशंस निकाल रहे थे और आज भी कर रहे हैं और असद जैसे लोग और whatever, आई एम श्योर सबने एक पॉइंट पे हिम्मत छोड़ दी थी या उम्मीद छोड़ दी थी बट Pakistan freaking finds a way. And I feel that's what I'm saying. Like, that's where a win like this, last time as well and this time as well, मुझे तो इस बात का ही सबूत है कि भाई rationality
से आप दुनिया को नहीं समझ सकते. You can't explain the world using, like you were saying, this was a very sane, rational take. But is it sane to just limit your worldview to rationality when you have experienced enough times now that Pakistan is very much capable of not doing ke we will qualify from here, but doing enough that the preposterous possibility of its qualification is possible at this moment. Hello? Usman, you still there? Yeah, I think we've lost Usman. Um, but yeah, मतलब वही कि मैं I think आप और किस तरीके से समझा सकते हैं कि ये पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कर कर क्या रही है और उसके साथ हो क्या? एंड आई थिंक इट वाज़ लाइक अ रियली गट्सी डिसीजन कि जो क्रिकेट के बारे में थोड़ी बात करेंगे, खास तौर पे फ़खर ज़मान के बारे में बात करेंगे. आई जस्ट वांट टू वेट टू सी इफ उस्मान कम्स बैक. बट व्हाइल just to stay with this, like how do you explain something like this? Uh, और सबके कुदरत का निज़ाम अब एक बाय हैंड बन गया है क्योंकि और किसी के पास कोई आसान एक्सप्लेनेशन है नहीं. एंड आई थिंक that's amazing that you have access to an experience that's so sacred and so profound. और मतलब काफी सारे लोग ना अभी अपनी ये अच्छा क्या हो गया, पागल ही हो गया, हा हा इमोशन. Okay, Usman's back. I'm back. But yeah, I'm just gonna be like, Usman, you need to close your Riverside and other Yeah, tabs. I just have. Okay, great. Yeah, so I was just saying कि basically, कुदरत का निज़ाम भी एक byword बन गया है, and because there is no other good explanation. But I think it's just amazing that we get to experience something that is so sacred and profound. And वही मैं कहने लगा था कि कुछ लोग कह रहे होंगे कि ओ कुछ बड़ा ही जज्बाती हो गया, but मतलब ना कल वाली किस्त में यैया अंकलों की बात बताई थी ना, तो बेसिकली आप जब बड़ा Yeah, कूल बन रहे थे ना कि अबे ये यैया टीम है और आपके बस अब बोलती बंद हो गई, तो मैं आप था. तो चुप ही रहे. Like you, but everybody else, there's you know who you are in the audience. There's a lot of yayyas who've texted me through the course of this World Cup. और फिर एकदम से सबकी फट जाती है, तो वो जो फट रही है ना, तो उसको अब आप एक्नॉलेज करें कि वो भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है. Yeah, बट you, या you know, the one thing that I found, and like I've written on this, is like the craziest thing that it will take, I think everyone, it'll take time to get their head round, is the fact that this was, so Fakhar's innings, like, Fakhar came back into the team and he's always been in the team because of the promise of something like this, right? You're like, yeah, Fakhar ye kar sakta hai. This is what he brings to the side. This is how he changes Pakistan's batting lineup. But I don't think in our wildest imaginations we would have expected Fakhar to play the kind of innings that he played today. Like, this was very different to how Fakhar plays. Fakhar is a guy who power plays I was looking up for the course of this piece. First 10 overs of an ODI power play he has a strike rate of 80. Today he had a strike rate of 157. He had hit okay, let me get this right. He had hit, I think, 16 sixes in power plays in his entire career before the last two innings, in which he has already he'd hit 14, and now he's hit 6 in like the last two innings. Okay, in a power play. He had hit in his entire career across all ODIs, across all phases, he had hit like 56 sixes before this game. So puri career mein. So, he's a six hitter, but he's not like a massive six hitter. He hit 56 sixes. And in the last two games, he's hit nearly a third of that total. He's hit 18 in the last two games. Right? He hit 11 sixes today. That is more than any Pakistani has ever hit in an entire World Cup tournament. Okay, like 11 sixes in 2 hours today. He has hit more sixes than guys like Afridi, guys like Misbah, guys like Javed Miadad, guys like Wasim Akram, guys like, I don't know, Azhar Ali. That's not a surprise, but anyone, Emir Shahzad, let's say, okay, Umar Akmal, our Sohaib Maqsood, who have played World Cups as power hitters. He hit more sixes in 2 hours, less than 2 hours, an hour and 43 minutes today than they have done in entire tournaments. The most sixes that any Pakistani had hit in a tournament before this
was Imran Nazir in 2007. He hit like 9 across our entire tournament. This dude hit 11 today. So it's these kind of things that like are just like, oh my god, what on earth just happened? And एक जो मेरी एक किस्म की वो थी, like a what if थी. There was a huge what if here that he was scoring these runs at the Chinnaswamy Stadium, which is like, gladiatorial home of the RCB, home to like the craziest batting feats in the history of the game. Chris Gale, Brendan McCullum, कौन किसने क्या नहीं करा है. And here was Fakhar Zaman, like pulling off this crazy ass innings in a crazy ass chase at this hallowed ground for like modern run making and run scoring. And it just felt like, man, and this is going to sound like such a lame Pakistani old man lament, but like, what if these guys had been playing in the IPL every year, every season? What if these guys had played every season? Haris Rauf would have known how to bowl in bloody Bangalore and not go for 2,000 runs in 2 matches. I mean, these things, yeah, you kind of think about them, but Fakhar's innings today especially got me just thinking about like the whole idea of Pakistanis not having played in that league and the kind of batting that he pulled off. It was up there with any, I guess, kind of, IPL ke jo greatest experiences ho chuke hain batting ke. It was up there with that kind of six hitting. It was like just phenomenal, absolutely phenomenal. No, I think you've put it in perfectly right, क्योंकि फखर की इनिंग्स एक तरीके में ऐसा नहीं था कि ओह यार मैं कभी सोचा नहीं था कि फखर ऐसे बना सकता है, which is kind of what you felt with those Saud and Abdullah innings at the start of the World Cup. मगर उसी के साथ साथ वही जो आपने बात की कि भाई इसी प्रॉमिस की वजह से आपको हमेशा था कि हाँ अगर फखर चल जाता है. And I think कि कुछ some of these stats, it's obviously also because we're looking at across formats, right? So like maybe Fakhar, the T20 batter, is different from Fakhar, the ODI batter, and obviously ODIs जिस तरीके से टीमें खेलती भी हैं कि बहुत अरसे तक कुछ नहीं हो रहा फिर एकदम से हो गया. So वो सारी बातें मद्देनजर रखते हुए, बट लाइक आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट लाइक कि बेसिकली दो चीजें. एक कि इवन हम लोग भी बात कर रहे हैं कि वो हारिस इतना पिट रहा था और शाहीन इतना पिटा, बट आई थिंक कि अगर पाकिस्तानी खासतौर पे चिन्नास्वामी पे रेगुलरली खेल रहे होते आईपीएल या जिसकी वजह से, तो हमें भी अंदाजा हो जाता है कि भाई मॉडर्न क्रिकेट में एक हद तक कुछ जगहों पे बॉलर चाहे जो भी हो, जोल गार्नर भी आ जाए तो वो पिटेगा. दैट्स जस्ट वेयर क्रिकेट इज टुडे. तो आपको ठीक है अंदाजा रखना है कि हाँ ठीक है थोड़ा कटर करा देता, ये कर देता, वो कर देता, बट एट द एंड ऑफ द डे there's a lot of data to show that at grounds like these, at places like these, चाहे वो जितने भी अच्छे बॉलर हो, जितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, वो बहुत ज्यादा पिटेंगे. दैट्स वन थिंग. द अदर थिंग आल्सो इज कि एक डिबेट जो आई थिंक फॉर जो क्रिकेट में अक्लमंद लोग हैं उनके लिए 2016 में सॉल्व हो गई थी और पाकिस्तान में अभी तक इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है. वो आज उसकी एक और आपको मिसाल मिल गई थी. सो द डिबेट वाज सॉल्व्ड इन मुंबई नाइट, द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड T20. उस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया टीम जो होस्ट थी एंड वो बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रही थी, और खासतौर पे विराट कोहली के भाई वो एक बंदा जो टेस्ट भी खेल सकता है, जो T20s में शुरू में प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स खेलता है, बट आखिर में उसके पास एक फिफ्थ गियर है जो छक्के चौके मारता है, बट बीच में वो यही करता है कि उसने एक छक्का मारा तो एक चौका मारा, तो उसके बाद बाकी 4 बॉलों पे वो डबल भाग लेगा तो 18 रन बना लिए उसने ओवर पे, और बड़ा एफिशिएंट और मॉडर्न एंड एवरीथिंग, एंड एवरीवन वांटेड टू क्राउन myself included India the champions. And then you had the West Indies who were like कि भाई एक तो उसमें वो लोग टेस्ट वेस्ट तो खेल भी नहीं रहे थे, और जो खेल भी रहे थे मतलब उनकी टेक्निक्स उस तरीके की नहीं थी, और वो यही मैथ ये थी कि वो ना डॉट्स खेल रहे हैं कि पहले वो क्रिस गेल और जो भी है मतलब वो अपनी गेट देयर आए हैं, बट दे कैलकुलेटेड कि भाई ये कोहली इतना भाग दौड़ कर रहा है, बट आप 3 डॉट खेल के बाकी 3 पे छक्के भी मार देना तो आप भी 18 रन बना. And उस चेज में where so many of them took so many dots and everyone was like कि कैसे खेल रहे, उन्होंने वो करके हरा दिया इंडिया को. That's I feel modern white ball batting का उस वक्त जवाब मिल गया था. आज वही फर्क था ना कि बाबर को अभी भी आपने कप्तान बनाया, अभी भी Pakistan is so enamored क्योंकि for so many years we didn't have a batter like of his quality के अभी भी कि बाबर वो रिजवान ये फलाना. अगर पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट में तरक्की होनी है तो you need
Fakhar Zamans and Asif Ali's by the bucket load. Like this, these guys that can help you compete the way the game is going. और इट्स ग्रेट कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स आते हैं और ये होता है और स्पिनर बेहतर होने चाहिए और फलाना और ढिमका, बट अनलेस लोग छक्के नहीं मार सकते रेगुलरली, आप compete नहीं कर सकते consistently white ball cricket. That's basically something that cricket should have understood 7 years ago. And that again today, as amazing as Babar is, as beautiful as it is to watch him bat, white ball cricket mein you need people like Fakhar, people जिनकी technique or balance or test acumen वगैरह वगैरह is not relevant. This is the thing that I found, like, just looking at Fakhar's record. He's not like a massive six hitter. He Yeah. isn't. He can hit sixes, obviously, like we've just seen. But he has not been until right now. And I think the idea of Fakhar as a six hitter has always been there. And I think that finds its roots in the fact that, he's unorthodox. Unorthodox, and Pakistanis love orthodox batters. वो थोड़ा सा unorthodox है, अलग सा है. So people think, हाँ, अच्छा ये ऐसा है, तो ये ऐसे छक्के मारता होगा. He doesn't hit a huge number of sixes in that World Cup, in that Champions Trophy final. ODI He hit 3 sixes. overall, No, I'm talking about his ODI game. His ODI game, for sure, he does not hit. Like, he's not a massive six-hitter. Even in T20s, Chima हमेशा कहता है, Hassan Chima हमेशा कहता है कि यार, actually, हम लोग जितना शोर बजाते हैं, Fakhar is actually the numbers of an anchor. He has the numbers of a top 20 T20 top order anchor, which is, his numbers trend closest to like somebody like Shikhar Dhawan, by the way, in ODIs, especially his like power play numbers. They trend closest to Shikhar, and we don't think of Shikhar Dhawan as. But it tells you something about Pakistan कहाँ है अपनी बैटिंग ग्रोथ में, कि हम लोग ने फखर को बनाया हुआ है as the guy who is like, and he's like a destructive ODI batter, उसमें कोई शक नहीं है. I think his key is that he can go big, and he can go big at pace. So like he can accelerate an innings through the middle overs, through the death overs or whatever, and he's really big that way. And he's the guy who will change your innings from like, I've said it before, 280 to like 330. But you look at somebody like Rohit now, I guess, who has changed his game and like is taking more risks because they believe, with our batting resources, we can take more risks up top. We should take more risks up top. Pakistan's not at that stage yet. Not anywhere close to that stage yet, where they can think about doing stuff like that. So Fakhar actually works for Pakistan, but it's just interesting to me that he works for Pakistan not in the way that we think and we want him to work, but in a slightly different way. मगर उसमें ये बढ़ के आराम से आप यही बात कर सकते हैं ना कि आज जैसे 400 रन चाहिए थे, तो आज तो कोई चॉइस ही नहीं, राइट? बट बाकी वक्त यही है कि क्योंकि रोहित को पता है कि अगर मैं आउट होता हूँ तो मेरी नौयत के 7 और खिलाड़ी हैं, ठीक है, they're not रोहित शर्मा with the exception of Kohli, but they can all, if the ball's moving or the spinners are on top or whatever, they can hold it their own, but they can also accelerate at a really crazy pace. फखर जमान को ये पता है कि मैं आउट हो जाऊंगा तो उसके बाद शायद ही कोई बंदा जो है वो उस तरीके से खेल सकता है. और वो जो मैं वेस्ट इंडीज की मिसाल इसलिए दे रहा था कि फखर जमान भी नॉट अ लाइक फॉर लाइक थिंग, बट उसको भी चाहिए कि काफी देर तक वो बॉलें पीता रहता है, जस्ट गेट्स हिज आई इन एंड देन ही कैन गो अप. एंड वही मसला है कि हमारे बहुत सारे बैटर्स यही करते हैं कि दे टेक देयर टाइम बट देन दे कांट गो अप. और not having that fifth gear is actually वही मैं 2016 वाली जो बात कर रहा था कि even though Kohli had that, but it's really ultimately comes down to six hitting, comes down to big hitting. और वो चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते. और मतलब वही है कि पाकिस्तान में even on a great day you've got Fakhar, you've got Iftikhar, and you've got like Asif, and then some of these younger guys like maybe Saim, Saim had an amazing CPL. Shadab, yeah. Shadab, I don't know, yeah, maybe, yeah. So that's where you're at. और बाकी सबकी पूरी बैटिंग लाइनअप इसके अराउंड 2-3-2 हो चुकी है. तो वो I think बड़ी जरूरी चीज है because again, like I think this was probably Babar's best innings in the tournament, but it was still suffering from something which either Babar really changes his game or that's the limitation. I guess that like I would just मैं एक benefit of doubt अगर दूंगा बाबर को, काफी considerable है. Like I would say कि वो जिस तरह से खेल रहा था शायद वो उसी प्लानिंग से खेल रहा था कि हमें विकेटें रखनी है, बारिश आ रही है, थोड़ी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होगी कि बारिश आने वाली है, हमें विकेटें रखनी है. तो अगर फखर वहां से चल रहा है
तो लेट्स हिट द पार स्कोर, लेट्स हिट द डीएलएस स्कोर 20 ओवर में एंड मेक श्योर कि हमारी विकेटें और ना गिरे. तो आई कैन गिव हिम दैट ऑन दिस ओकेजन, आई कैन गिव हिम दैट. बट यू राइट, ही वाज लुकिंग बेटर. एंड द अदर थिंग, अगेन गोइंग बैक टू चिन्नास्वामी, इज एक्चुअली पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इन दिस वर्ल्ड कप. चिन्नास्वामी में ऑलमोस्ट दे स्केयर्ड ऑस्ट्रेलिया फॉर लिटिल व्हाइल. चेस जो कर रहे थे 370 की चेस, 375 की चेस थी, थोड़ा सा डरा दिया था ठीक ठाक. उसमें तो इमाम ने भी प्रोबेबली हिज बेस्ट ओडीआई इनिंग्स खेली थी उस मैच में. तो वही मुझे एक लगता है कि यार चिन्नास्वामी अगर उस एनवायरनमेंट में आपके बैटर्स खेलें रेगुलरली, पाकिस्तान में है पिंडी इज अ सर्फेस वेयर लाइक क्रेजी थिंग्स हैपन इन वाइट बॉल क्रिकेट, बट आई जस्ट फील लाइक इन दैट एटमोस्फियर अगर पाकिस्तान रेगुलरली अपने बैटर्स को खिला सके ऑन दोस पिचेस, दिस इज देयर सीलिंग. कि दे कैन स्केयर साइड्स चेसिंग 370. वो बड़े ग्राउंड पे 345 भी चेस कर सकते हैं जैसे श्रीलंका के खिलाफ करा था. और इस ग्राउंड पे आधी इनिंग्स तक they looked set dead on course to chase down 401, which is, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये लफ्ज बोल सकता हूं without like breaking out into laughter or somebody putting a straight jacket on me, because 401 चेस करना वो इंग्लैंड के लिए भी बड़ी बात होती. बाय द वे, दिस इज लाइक नो जोक. एनी साइड you chase down Yeah. 401 in ODI, it's a big deal. It's a big deal. नहीं, आई थिंक एक चीज जो अब काफी लोगों ने पहले भी मेंशन की है कि आपको नजर आता है कि जो छोटे ग्राउंड होते हैं उस पे लोग ज्यादा लंबे छक्के मारते हैं, क्योंकि एक दफा जब आपको पता है कि यहाँ सिर्फ 65-70 मीटर की बाउंड्री है, तो फिर आप ज्यादा मतलब ना खुल के खेल रहे होते हो, और वो नजर आता है कि उस ग्राउंड पे 65 मीटर की बाउंड्री को 90-90 मीटर के लोग छक्के आराम से मार रहे हैं. आई थिंक वही दैट कम्स डाउन टू लाइक तो अगर आप ऐसे ग्राउंड पे ज्यादा ज्यादा खेलते रहेंगे तो फिर आपकी बैटिंग के अंदर वो रिस्क लेने की आदत पैदा हो जाएगी, बिकॉज you just can be assured कि yes, like I can actually pull this off. And I think कि पाकिस्तान ने पिछले 1-2 साल में एक चीज जो की है कि they have had like really big chases, and so because of that, like even though हाँ. क्योंकि हम इतने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट देख रहे हैं, तो हमारे लिए अभी भी ये पागलपना लगता है कि पाकिस्तान ऐसी चीजें कर सकता है, बट just the numbers of it, and there's lots of कि वो ऐसी जिस टीम के खिलाफ बनाया तो वो ये थी, या इस ग्राउंड पे बनाया था, जो कुछ भी था, but they've actually done a lot of 300 chases. They've scored really well. They are probably a better team chasing, और खास तौर पे वो स्कोर सेट करने वाली हाँ, बात जो नो डाउट. हमेशा से हम आपके बाबे कहते हैं कि नहीं, यू शुड हैव विकेट्स इन हैंड, ये वो लाइक क्लियरली पाकिस्तान की इस जनरेशन के लिए they struggle to set a good score. It's easier for them to you can see that Pakistan is a lot more fluent chasing these mammoth totals than it is batting first, and on pitches that need them to score like maybe 280 to 320. उनसे नहीं हो पा रहा है इस वर्ल्ड कप में, but chase में वो उनसे हो रही है चीज. Yeah, which leaves us, all of which leaves us with moving on now to अब आगे क्या होना है. मुझे मुझे अभी भी, मैं अपनी कल की जो मेरी रैशनैलिटी थी और सैनिटी थी, वो आई एम क्लिंगिंग ऑन टू दैट लाइक with my last, like the edges of my fingernails on a cliff of sanity, and if I fall off then I'll go completely crazy. But मैंने पकड़ के रखा हुआ है कि अभी भी श्रीलंका को न्यूजीलैंड को हराना है. अब कल के कंपैरिजन से इट्स लुकिंग स्लाइटली लाइकलियर, और स्पेशली कि वो बैंगलोर में खेलेंगे, बैंगलोर में यहाँ पे पिटाई हुई है न्यूजीलैंड की, तो क्या पता. लेकिन अभी भी आई थिंक श्रीलंका को न्यूजीलैंड का हराना, और पाकिस्तान को भी इंग्लैंड तो मुझे लगता है यानी खत्म हो गई है टीम. वो ना सिर्फ खत्म हो गई है, वो यानी बर्बाद होके वो अजीब ही कुछ सीन हो गया इंग्लैंड. ये एक फुल ओल्ड स्टाइल इंग्लैंड इन सब कॉन्टिनेंट लेवल एक इम्प्लोजन हुआ है इंग्लैंड टीम का. जो बीच में वो माइकल वॉन भी आके कह रहा है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिए, ये कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस कर दिए, और ओवन मॉर्गन कह रहा है कि टीम में कुछ गड़बड़ लग रही है. ये लिटरली राशिद लतीफ या और सम अदर एक्स क्रिकेटर लाइक हसन रजा सेइंग कि वो इंडिया को बॉल आप दूसरी देते हैं, ये उस लेवल की वहां पे डिस्कोर्स चल रही है इंग्लैंड में कि और आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे अनाउंस कर दिया. और डेविड विली ने अपनी अनाउंसमेंट, अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. सबसे बड़ा जो ब्लंडर था कि इंग्लैंड को ये नहीं मालूम था कि वो इस टूर्नामेंट के तहत उनकी चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन इस टूर्नामेंट में डिपेंड करती है. ये इंग्लैंड को मालूम नहीं था. अपनी पिछली, आई थिंक इससे जो पहली डिफीट थी उस गेम से पहले तक उन्हें मालूम नहीं था. तो इंग्लैंड का एक बहुत ही होल सेल मैसिव लेवल स्केल का इंप्लोजन चल रहा है. तो आई वुड थिंक कि पाकिस्तान
हरा देगा इंग्लैंड को। आई वुड थिंक कलकत्ता में आई थिंक चांस है अच्छी, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है यार कि वो जो पैसे का बैग जो कल मिला था ना, उसमें हम लोग अभी वो रस्सी पकड़ लिए और ढूंढ रहे हैं कि वो मैंशन है किधर। मुझे अभी भी लगता है कि अगर न्यूजीलैंड हार जाता है श्रीलंका से, so then we've not only found the money bag, we found the goddamn 15-bedroom mansion on the beach. आई फील कि समथिंग दैट जो एटलीस्ट जो मेरे लिए शायद जिंदगी इसलिए थोड़ी आसान हो जाती है कि आई स्टिल डोंट थिंक कि पाकिस्तान जीत रहा है वर्ल्ड कप या जो कुछ भी, बट कि वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, कल कैलकुलेटर निकल आए, आज फिर के इस किस्म का मैच देख लिया, वही कि जो बंदे ने 8 छक्के मारे थे उसने 11 मार दिए, ये फलाना हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये जब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, आई थिंक फॉर मी पहली बात है यही काफी, क्योंकि to experience this you've already gone past that stage where it's like ये टीम सड़ी हुई है, कभी कुछ नहीं करती है फलाना खाना, and then you're dragged back to it, so वो जो क्या कहेंगे उसको, जो जैसे मतलब जिस यू टर्न आप लेते हैं, जिस जो जो जी शॉक मिलता है गोइंग फ्रॉम लाइक डिस्पेयर टू होप अगेन, आई थिंक मेरे लिए तो वही काफी है। और दूसरा कि वही कि अभी भी कितना लाइक द ओनली थिंग दैट्स गोइंग फॉर पाकिस्तान इज जस्ट हाउ यार मगर अनलाइकली। वो तुम्हें तुम्हें पागल कैसे नहीं करता है, वो तुम्हें पागल कैसे नहीं करता है इतना जो एक जो इतना, यस, जैसे इवन अगर आप मैं आई जैसे थिंक रैशनैलिटी ये ढूंढ बड़ा रहा था, ठीक है ना, आज जो एक एक ब्रॉडर लेवल पे इरेशनल एक्ट हुई है, मैं उसमें थोड़ी बहुत कोई रैशनैलिटी ढूंढने की सोच रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ लिखना है, समझना है क्या हुआ है। लेकिन मुझे ये लगा है कि इतने सालों के बाद जितनी मैं वो रैशनैलिटी ढूंढता हूं ना, उतना ही मैं दूर उस रैशनैलिटी से अल्टीमेटली जाता हूं। यानी वो मैं उसे लेने की कोशिश कर रहा हूं, मगर वो मुझसे और दूर 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 हो रही है कि यार ये कैसे हो गया कि आज फखर ने अगली गेम में फखर शायद 15 बॉल पे 0 बना के आउट हो जाए, और फिर जो जो भी आपने लिखा है इस गेम में, इस गेम के बारे में, वो तो दैट सीम्स लाइक यू द राइटिंग्स ऑफ अ मैडमैन, आई तो मीन आई डोंट नो हाउ यू काइंड ऑफ। आई फील वाज रियली इंटरेस्टिंग विद यू, क्योंकि एक हमारी कमेंट अभी लाइव लाइव चैट में आई हुई है कि इफ एनीवन शुड हैव नोन नॉट टू राइट पाकिस्तान ऑफ, इट्स उस्मान, right? But at the same time, like this is your job, so actually in your career, the number of times where you've had to write this article is still, even though each one of them is iconic, is still like 3 or 4, versus the number of times you have to be like Pakistan humiliated once again and ended as in the as the country is facing widespread political and economic turmoil. It was disappointing to see like you've written that article a billion times more, right? So even though everyone remembers वो जो 4 लिखे थे जब पाकिस्तान ने हराया था, उस्मान ने बड़ा फिट लगा था, end of the day, like your experience of it is कि मतलब there's 900 of those shitty articles and 4 of the great ones. तो आई थिंक एक तरीके एक वजह यही कि जब आप इतने करीब होते हैं, डज ड्राइव यू क्रेजी, राइट? बिकॉज यू हैव टू प्रोसेस इट एवरी टाइम एंड यू रिमेंबर प्रोसेसिंग द शेडी मैचेस अ लॉट मोर ऑफन। आई थिंक कि ये जब हम लोग पिछला मैच जो लास्ट दैट वी लॉस्ट, उसके बाद में जब बैक बेंचर्स वाला शो कर रहा था, तो मैं यही कह रहा था कि दिस इज व्हाई इट सक्स टू वर्क, बिकॉज द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज डिस्कस लूजिंग। आई थिंक साउथ अफ्रीका वाला जो मैच हारे थे, but now that's your job and you have to do it, and I think that takes you away from it. So when something like this happens, I feel like मैं क्या ये पागल है, ये हो क्या रहा है? But at the same time, I think कि ये सिर्फ पाकिस्तान फैंस के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए भी एक बड़ी जबरदस्त चीज पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की otherwise and not just Pakistan, I think Afghanistan's been brilliant for this World Cup. I think Pakistan's been really fun doing the role that it always does. आई थिंक कि जो सबसे अमेजिंग द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर सोल्ड वाली जो गेम है, कि अगर 92 के बाद से आप अभी देख लें, तो इंग्लैंड ओनली एवर हैड वन गुड वर्ल्ड कप इन आवर लाइफ टाइम्स, राइट? लाइक दे सक्ड Right. इन 90s, लाइक दे वर They डिस्ट्रो suck मतलब कि forever. They suck forever. एपॉक, हाँ, कि जयसूर्या ने उनको इस तरीके से तबाह किया कि उसकी वो जनरेशन खत्म कर दी उन्होंने 96 99 में होम पे पहले होम टीम थे that didn't make it to the next round, right? 2003 में they're kind of good but they still get kicked off. 2007 they suck. 2011 Ireland defeats them. 2015 once again they have such a terrible World Cup कि फिर वो
कहते हैं ठीक है मॉर्गन तू जो करना चाहता है तू कर। एंड नाउ अगेन लाइक दिस फील्स लाइक अ शॉर्टकट, मगर अगर आप तारीख उठा के देख लें तो इंग्लैंड इन एशिया यही स्क्रिप्ट हर दफा लिखी गई, एक दो दफा की एक्सेप्शंस के नाम। नो यू नो व्हाट, अब मैं ये मैच खत्म हुआ ना तो आई स्विच्ड ओवर टू द जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की गेम हो रही थी, उस पे नासिर हुसैन और आई थिंक एथर्स दोनों कमेंट्री कर रहे थे। एंड आई किड यू नॉट यार अहमर, आई स्वेयर उनकी आवाज में एक यानी एक ग्ली सी थी जब वो पाकिस्तान का रिजल्ट बता रहे थे ना। दे वर लाइक ओ पाकिस्तान फैंस विल बी वेरी एक्साइटेड, they've pulled off it, and like just the way they were talking, usually बड़े reserved होते हैं दोनों, personality दोनों में हाँ बहुत है, लेकिन उनका एक बड़ा एक अच्छा सा वो होता है, लाइक तमीज वाला फॉर्मल सा एक ब्रॉडकास्टिंग स्टाइल होता है, जो कि भी होते हैं, मगर उनमें जो एक प्योर सी ग्ली थी ना कि वी बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस, हमें मालूम है ये किस तरह से ये काम करते हैं। या और तुम लोग भी देखो, ये तुम या लोग नए फैन होगे, तुम लोग शायद जवान होगे, तुमने कभी देखा नहीं होगा, तो ये मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं ना ऑन एयर, उसी से आपको पता हो जाना चाहिए कि ये एक बहुत स्पेशल चीज वहां पे हो रही है। तो वो ये इट एंड इट यू राइट दैट इट कोर्सेस थ्रू द इंटायर टूर्नामेंट and lights it up. Like this tournament actually has turned out okay. It's had like some great performances from Afghanistan, from Netherlands. India have been like India have put together some fast bowling displays that माय गुडनेस, लाइक एक अलग लेवल के फास्ट बॉलिंग डिस्प्लेज इंडिया ने इस टूर्नामेंट में लगाए हैं। साउथ अफ्रीका की पावर हिटिंग, बहुत क्रेजी क्रिकेट चल रही है। लेकिन एक तरह से आई गेस क्या बुढ़े हो रहे हैं हम लोग कि एक स्टेबिलिटी हमारे पास है, क्या पाकिस्तान वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान पिछले 30-35 साल से करता आ रहा है, वही काम चल रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, पाकिस्तान मरते 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 फिर से जिंदा हो गया। ये वही चल रहा है पाकिस्तान के साथ। सो I guess to seek rationality, I seek comfort and a sense of routine. Routine helps with rationality. You have routine; it gives you some kind of hold on things, and I think that is maybe ultimately what this is. कि पाकिस्तान फिर से वो कर रहा है और शायद वो ना पहुंचे सेमीफाइनल में, मगर उसने जैसे तुम कह रहे थे कि एक दो लम्हे पाकिस्तान ने हमें फिर से वैसे दे दिए हैं, जिसके तहत आप इस वर्ल्ड कप को पाकिस्तानी फैंस अपार्ट फ्रॉम शोएब नवीद विल से कि हाँ ये हमारी मैट्रिक से ये ठीक ठाक सक्सेसफुल कैंपेन हो गई है। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक कि मैंने देखी नहीं क्योंकि मौका नहीं मिला, पाकिस्तान में सिनेमा में लगती नहीं है, बट लाइक जो अभी शाहरुख खान की जब जवान आई थी और वो हिट गई थी, so a lot of people, it was not like yeah this is a great Shahrukh movie or anything, but it was just कि yeah it's reassuring to know that Shahrukh still doing Shahrukh things can still make a hit. I think Pakistan this World Cup is kind of like that, right? Like, yeah, sure, they'll probably not win it or anything, but it's nice to see that even with everything, they can still pull off this kind of thing. आखिर में मैं कुछ कहना चाहूंगा, जो लोग कमेंट्स में अ, इतनी ओरिजिनल और जबरदस्त जोक्स मार चुके हैं कि जी 5 रुपए देके इनको अच्छा इंटरनेट दे दो, एक दफा फिर से बीसी जितनी मुश्किलों से ये पॉडकास्ट पुट टुगेदर हो रही है अभी के लिए, और लाइव वाली हमेशा बुरी जाती था, और मैं रोज हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग लगा देते, तो आपको इतना ही मसला है, जस्ट वर्क फकिंग वेट फॉर एन आवर, द रिकॉर्डिंग विल बी देयर। मगर ना ये यही हरकत जो है ना कि आके इनका इंटरनेट बड़ा खराब है यार, लाइक प्लीज ब्रो, लाइक ये ना अब आज के मैच के बाद ना ऐसे कमेंटर्स, लाइक आपको पता है योर वर्ल्ड व्यू इज रॉन्ग, लाइक ये जो यैया हरकत जो है ना, यैया हैज बीन डिफीटेड। यैया कल रात डाला गया था, तो इट वाजंट इवन कि आज हार के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ, एंड लाइक कल हाँ, रात ही बात हो गई थी अबाउट व्हाट यैया इज, और आज यैया हैज बीन डिफीटेड, सो एवरीबॉडी विद लाइक these stupid comments like bro, you know yaya is dead. And on that note, I'm gonna end the show. Usman, thank you for doing it. And we will see you soon whenever Pakistan plays next, or yes, whenever the hell we find the time to I do was this. going to leave this show on a really depressing note, to bring Which down. I is, don't know if I should do it. Should I do the mood kill for the day? I don't think so. We're gonna end it Oh, here, and people are going Usman to is find going out to anyway. kill my mood personally, but not yours. Bye. What is the thing? Zaka